Hello everyone, very good evening. I hope you are able to hear me clear and loud. Please confirm that in the chat कि सर मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ अच्छे तरीके से, आप लोगों को सुनाई दे रहा हूँ. Can you guys just put that into the chat? Let me take few moments to confirm. Perfect. So I can see that you guys can hear me clear and loud. तो बिना किसी रुकावट के let's get started on time itself. So hello everyone. First of all, thanks for taking out time on a weekend. Sunday की 3 बजे की दोपहर. I understand the Sundays are mostly lazy. आप अगर हमें देख रहे हो live, there is no bigger testament to the fact that how sincere your topic, you're related to this topic called data science and your career. And for those people who are going to watch this recorded later on, this live session is gonna be full of information for everyone जिनको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, थोड़ा भी इंटरेस्ट है मशीन लर्निंग में, थोड़ा भी इंटरेस्ट है आज का जो बज क्रिएट हो रहा है मार्केट में अराउंड द चैट जीपीटी बार्ड जेमिनी. तो ये सारी चीजों के बारे में वी गोना डिस्कस इन डिटेल टुडे. And to discuss that, we have brought a great industry expert from the market. The person who has all the degrees in his cadence, be it IIT, be it IIM, and it's when it talks about the practical exposure, he has worked with multiple startups, helped them build their data science whole vertical. He is a lead data scientist in Geo right now, and at the same time, he's doing consultancy with lot many startups. And not only that, he is a data science mentor. He does do the consultancy and teaches student as well. So a person with so many calibers and a lot of practical insights about that how the world is moving in the world of AI. Please, hello everyone. Help me to welcome with me Subhodeep. So, sir, are you there? Yes, Subhodeep is here. Welcome, Subhodeep, to come live in this session. Welcome again. Thanks for taking out the time. So, before I go and talk more about and we start our discussion, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा quickly अपना एक introduction दे दीजिए so that everyone who is watching it live या फिर वो बाद में recorded देखेंगे, they will have a context that what next few minutes whom that person is and how they're going to interact with. All yours, sir. Sure. Thank you so much, Vishwa. First of all, a very, very warm good afternoon to everyone who is watching in live. Really, really appreciate your efforts. As Vishwa said, that this is one of the biggest testament for us, with for helping us to connect with each other. आई नो नॉर्थ में बहुत ठंड है अभी मेरे मुंह से भी भाप निकल रहा है एज आई स्पीक बट या आई थिंक with the information that we want to share, I think it would be making a very warm connection with you. So a quick introduction about myself. I am Subhodeep. I am a chemical engineer by my BTech graduation, and I passed out in 2013, post which I got my feet wet into manufacturing division. So I was in Reliance Industries, wherein I worked in a manufacturing plant, right? And there I got exposed to multiple aspects of a manufacturing division, wherein there is production, there is maintenance, there is supply chain considerations. And at that point of time, there was something called advanced process control that was being introduced in our plant, and it was very interesting that how we can control a huge plant, something that is churning out 72,000 kgs of product per hour can be controlled using mathematics, right? And that's wherein in 2013 14 the data science field was kind of budding up in India, and I got an opportunity to do my masters from Calcutta, ISI Kolkata, and IIT Kharagpur, to get my degree in data science. I got lucky there, and I also happened to represent my country in an international data science competition, which was hosted in Paris by Microsoft. The competition was known as Data Science Games. Now, after coming back, I kind of joined Johnson as an intern, and there I got exposed to a lot of supply chain problems. One of the problems that I dealt with at that point of time was pattern recognition about expiry of products, right? So supply chain of the biggest cost sink of a supply chain is expiry of the product. So I kind of got exposed there and kind of tried to bring out certain predictive models to solve that particular problem. Post which I moved on to United Health Group, wherein I got exposed to healthcare,
And it's interesting that, as you change the industry, the complexity of the problems, the architecture of the problems kind of get different, right? So when I moved into healthcare and I was with UHG, the problem statement was, how can I predict the incidence of a particular chronic disease, given the historical claims data of a particular patient, and then create a model out of it. And then when I came back to Geo as a lead data scientist in 2022, I started working with Industry 4.0, and something that I had left in 2016 for my master's, I came back in that same field. And now I'm kind of working towards applying AI in the field of manufacturing. So it's a very interesting Hmm. problem. As we progress, I'll give you certain hints into what type of things we have done in my various organizations. I also have been consulting with a lot of startups in Hmm. fintech, in insurance sector, and I have been, associated with mentoring also for quite some time, around 5 years of almost. Yeah, Awesome. So, Subhadeep, that's huge. And if I have to pick few of the things from here, many of time the students who are watching these videos or take courses on PW skills, they don't come from the computer science background, and when they don't come, उनके मन में एक हमेशा डाउट रहता है कि मैं मैकेनिकल का हूँ, मैं सिविल का हूँ, मैं केमिकल का हूँ, मैं माइनिंग का हूँ. Will I still be able to become a data scientist? Will I still be able to become a software engineer? Typically, I believe you're also a very, the real example that how you can do a transition from a non-CS branch, from a non-circuit branch to the field of data science. If you have that curiosity, if you have that just to put up extra, strive hard, and learn things, I believe the world is pretty open. And I think you will agree to this, Subhadeep, that today one of the best thing about the modern IT, the eco space is that every company is open to take you, provided you have that skill. So skill is what that matters, and that's how absolutely. we would like to start, right? Absolutely. No, I completely agree. And I'll tell you a funny story. So when I Hmm, went into IIM, right, in 2016, hmm, so I had done very, little. I had very little computer science understanding. Class hmm, 8, 9, when we had done compulsory C++ plus plus hmm, and all. So hmm, very little understanding. And at that point of time, we got exposed to statistics, which was new to me. I got hmm, exposed to R, which was completely new to me, and then hmm, also got exposed to Python simultaneously, hmm. right? And this is just three subjects I'm talking about, because then there are other subjects also. You have to learn finance, you have to learn marketing. And that point of time, it was very overwhelming in terms of, how do I kind of, first of all, You're right. compete with other people who have had, let's say, 3 or 4 years of experience in Hmm, computer science, right? But the greatest thing about data science is that's in the culmination of domain and tech. ठीक है. right. तो आपके पास अगर वो डोमेन एक्सपर्टीज है, लेट्स से यू इफ यू आर मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि प्लांट कैसे रन होता है, या एक असेंबली लाइन में क्या होता है, राइट? इफ यू नो दैट, राइट, देन पिकिंग अप अ डेटा साइंस is definitely something which is, you have to put in a lot of hours, but doable. Right. And the biggest part is that when you combine your skills with domain and tech of data Hmm, science and mathematics, so we used to say that there's a, like it's a Venn diagram wherein there are three sets, right? So it's the domain, there is tech, and there is maths, and data science is basically the intersection of these three, circles, so these three sets, right? So you right. have to find the sweet spot in the balance of domain, data science, and tech. So if you are a mechanical engineer or you are a chemical engineer and you haven't done coding, that's absolutely fine, because I in 2016 had almost like zero knowledge about what we have to do in R and Python, but I still could, do some hard work and pick it up. Now with the advent of so many resources, with availability of so many videos about data science in the open source platforms, I mean, it's just the decision that you have to take. It's just that decision that, okay, from today onwards, I'm going to start my journey and develop my data science skills. Awesome, amazing. So let's try to, that's really insightful. I couldn't agree more on that.
just to move further and talk about what the topic of the discussion today is, for which we are sitting together, let's try to address the elephant in the room. AI today, I think everyone has heard enough, right? AI ka buzz har jagah hai. Be I go in India or abroad, anywhere I go these days, I don't see a startup, I don't see a discussion, I don't see a topic which does not involve AI into that. So before we talk there, there are two school of thought. This one today in the modern day, everyone is talking about generative AI, right? And then we have something called as a conventional AI. And I think you're the right person to answer that because typically 10 years now, when it was still booming up, I think AI is nothing new. But that's was still the time when the people, this was not such a fancy term. So how do you differentiate Subhodeep, in very simple terms to make everyone who is watching us understand in a very simple words? आप कैसे समझते हो कि what is the difference between a conventional AI that we happen to see and what does this generative AI, the new budge of the market today? So it's a very interesting question, Vishwa, and I know बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है, राइट? ये सडनली जनरेटिव एआई क्या चीज आ गई है, large language models क्या आ गया है, and there's some kind of a curiosity and also some kind of an uneasiness that how do I kind of keep a track of, or how do I catch up to these everyday advancements that is happening. And it might be, you might think that कि ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है, बट ये सबके साथ हो रहा है, जो भी इंडस्ट्री में एक्सपर्ट्स है, राइट, सबके साथ हो रहा है कि इस पर्टिकुलर फील्ड में इतनी ज्यादा एडवांसमेंट्स हो रही है कि हमें ट्रैक करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? वी Hmm. हैव टू बी ऑन आवर टोज एवरी डे. Now, if I go back to the basics, key, there are two folds of data sciences. One is discriminative AI and one is generative AI, right? Discriminative में हम लोग अभी तक जो सोचते आए हुए कि हम एक decision boundary बनाते हैं between the data and we kind of separate out whether I'm doing a regression problem or a classification problem. We are only focused on that decision boundary, right? वो non-linear भी हो सकता है, वो linear भी हो सकता है. But when I Hmm. say, when I talk about generative AI, you are talking about learning the distribution of the entire class. So you're not focused on only the decision boundary, right? To put it Hmm. into simple perspective, generative can generate, it's like kind of some kind of an extrapolation that your model can do. And discriminative Hmm. is within the data, it is kind of separating out the boundaries. Now, अगर मैं Hmm. इसको use case level पे ले जाऊं, right? सो जेनरेटिव एआई का जो फील्ड है वो है दैट हैज कैप्चर्ड इन मोर इन टर्म्स ऑफ इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट, राइट? सो फॉर एग्जांपल, क्या मैं एक नया कार्टून कैरेक्टर जनरेट कर सकता हूँ यूजिंग Hmm. सर्टेन Hmm. कोड, राइट? सो दैट कार्टून कैरेक्टर मे नॉट एग्जिस्ट एवर in your data set, right? It's a completely new character. Hmm. सिमिलरली टेक्स्ट के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें, क्या मैं एक नया स्टोरी जनरेट कर सकता हूँ? Hmm. मैंने हो सकता है आई हैव नेवर सीन दैट स्टोरी, इट्स अ कंप्लीटली Hmm. न्यू स्टोरी, राइट? It's an invention, right? So can I Hmm. generate a new story rather than discriminate multiple stories? That is the difference between discriminative AI, which is typical machine learning spectrum, and then there Hmm. is deep learning and advanced deep learning, जो कि इस generative AI spectrum में आ जाता है, which can generate Hmm. images, which can generate videos, which can generate text, etc. Okay. Okay. Very nice. So what we understand is कि जहाँ पे boundaries well defined है, typically more of like a rule based, that's typically we go around the conventional AI, और जहाँ पे you to build something new, आजकल लोग emails लिखते हैं, right? आजकल मैं Yeah. देख रहा हूँ लोग चैट जीपीटी यूज करके ऑफिस के ईमेल जनरेट कर लेते हैं, किसी को मैसेज लिखना होता है वो वहां पे कर लेते हैं. सो व्हेन यू हैव टू जनरेट समथिंग न्यू, टिपिकली दैट्स वेयर इट वर्क्स आउट. तो मेरे को लगता है सर, एवरीवन हु इज वाचिंग दिस, ऑल द स्टूडेंट्स, they all have used enough of chat gpt, and I think they are well versed of it. I think if you go and talk about what ChatGPT is, I think it would be a redundant answer to cater. But if I go a little deeper, that let's say that I have to build my own ChatGPT, right? Let's say that I have to build my own company like OpenAI. What does it take, and why do we say it's too, you take too much resources, it's too expensive, you need to have like huge piles of the money to build a company like OpenAI? Or in very simple terms, we have to explain that how internally, let's say that ChatGPT works, or how these large language models are being trained and they're used.
I think that's also something which will be very insightful to all the learners who is watching this. Okay, perfect, Vishwa. I think that's a very interesting question. Hmm. So I'm pretty sure many of us might have heard about a paper by Google Deep Brain, the brain team, right, in 2017, and the paper that was very famous termed was the topic was attention is all you need, and it was the Google team who invented the concept of attention mechanism, right? Hmm. Now, I'm not going into the details of what attention mechanism is, but prior to attention mechanism, the NLP models that were existing in the market, for example, our recurrent neural networks, the Hmm. LSTM, the gated recurrent units, right? They struggled with the problem of vanishing gradient, right? So, बहुत लंबे sequences our model could not learn. Hmm. तो उससे क्या हो रहा था कि हम लोग हैलुसिनेशन में बहुत जल्दी पहुंच जाते थे, राइट? तो अगर आप उस मॉडल को बोलोगे कि भैया ये स्टोरी पढ़ो और इसको Hmm. समराइज करो, तो वो पांच Hmm. छह सात आठ 10 वर्ड तक तो करता था, उसके बाद रिपीट करने लग जाता था। Hmm. तो वो मतलब ट्रांसलेशन सर्विस, देन समराइजेशन सर्विस एग्जिस्टेड, बट दे वर Hmm. नॉट सो एक्यूरेट। बट जब Right. गूगल ने अपना ये पेपर निकाला, अटेंशन इज ऑल यू नीड, एंड दे काइंड ऑफ केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, Hmm. दैट वाज अ गेम चेंजर इन दिस इंडस्ट्री। सो Right. पहले अगर मैं इसको बहुत सिंपल टर्म्स में समझाना चाहूँ, Hmm. पहले क्या होता था कि आपके सारे जो वर्ड्स है, आपका जो लर्निंग होता था, थ्रू द एंटायर सेट ऑफ वर्ड्स यू वुड गो एंड लर्न समथिंग, राइट? और क्या होता था अगर आपके नंबर ऑफ वर्ड्स बहुत बढ़ जाते हैं, so you would forget those words. Your human Right. brain is also like, if you read thousands of pages in a day, you will forget the Right. first 200 300 pages, right? You will not be able to remember everything. बट जब ट्रांसफॉर्मर्स आया तब उन्होंने आर्किटेक्चर ही चेंज कर दिया। उन्होंने बोला कि देखो भाई, हम ऐसा नहीं करेंगे कि वर्ड्स को हम ऐसे समझेंगे, हम वर्ड्स को एक वर्ड के साथ हर वर्ड का इंटरेक्शन देखेंगे। उससे क्या Hmm. हुआ कि जो वैनिशिंग ग्रेडियंट का प्रॉब्लम था हमारे पुराने सीक्वेंसेस में, पुराने आर्किटेक्चर्स में, वो सॉल्व हो गया। और Hmm. जैसे ही वो सॉल्व हुआ, व्हाट हैपेंड इज कि now what I could do is I could have very long sentences and understand those sentences through lot number of parameters, और मैं कभी नहीं Hmm. भूलता। अब बात बस Hmm. इतनी आ गई कि क्या मैं बहुत ज्यादा डेटा ले सकता हूँ, और क्या मैं बहुत ज्यादा पैरामीटर्स बना सकता हूँ, और मैं इस पूरे डेटा को अच्छे से कैन आई अंडरस्टैंड इट विदाउट नाउ Hmm. द प्रॉब्लम ऑफ वैनिशिंग ग्रेडियंट और भूलने की प्रॉब्लम, राइट? Hmm. This was the game changer, and it's interesting that OpenAI kind of picked up the concept of transformers from the Google's paper and Hmm. kind of created this such amazing thing, right? Now, when it comes to large language models, there are two different, I would say, two different teams, right? One is basically encoder only architectures, जो Google बनाती है, BERT, BARD, etc., right? And जो GPT based models है, वो decoder only architectures बोलते हैं उनको हम। Hmm. तो एट द एंड ऑफ द डे वो जो ट्रांसफॉर्मर का कॉन्सेप्ट है, दैट मेड एलएलएम्स पॉसिबल। एंड Hmm. इसमें अब हम बहुत सारा डेटा डालते हैं विद यूजिंग बहुत सारे पैरामीटर्स, एंड देयर वाज वन मोर कॉन्सेप्ट दैट मेड चैट जीपीटी a differentiator, that was reinforcement learning based human feedback। तो जो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस मॉडल को ह्यूमन फीडबैक के साथ साथ ट्रेन किया। तो उन्होंने बहुत लोगों को हायर किया, एंड व्हाट दे Hmm. डिड इज दे जनरेटेड आंसर्स, दे जनरेटेड टेक्स्ट, दे जनरेटेड ट्रांसलेशंस, दे जनरेटेड समराइजेशन, और उनको बोला इसको ठीक करो। इससे क्या हुआ, ह्यूमन फीडबैक इंटीग्रेट हुआ ब्यूटीफुली इन द मॉडल्स Hmm. अंडरस्टैंडिंग, एंड उससे क्या हुआ कि मॉडल अपने आप समझने लग गया कि राइट आंसर्स क्या होने चाहिए, हेलुसिनेशन कम हो गई। And Right. that was the biggest differentiator of ChatGPT, which includes basically a very big LLM and then RLHF concept, which makes ChatGPT so wonderful. Right. So, Subhodeep, just to add there, typically I would also like you to, put a little light around. Let's say to build an application like a Chat GPT, right?
since it's a large language model, you have to feed in the huge amount of data. What is that huge data, right? No, of what size do you expect that that much data is needed for the training of the models? And how Right. expensive it is in terms of the resources, in terms of the infrastructure that is needed, and how much time does it take to train such models? If you can also put some lights around that. So there are two schools of thought when we talk about training a large language model like Hmm. ChatGPT. One is can we do it from scratch? ठीक है Hmm. कि हमने एक मॉडल लिया जिसके वेट्स हमने बिल्कुल ही स्टार्टिंग से इनिशियलाइज कर दिए। Hmm. अब क्या मैं ओपन सोर्स जो भी हमारे लिंक्स है वहां से मैं वेब स्क्रैप करके डेटा लेके आऊं, ठीक है। Hmm. एंड इंटरेस्टिंगली अगर आप मैं अगर आपको थोड़ा डीप में बताऊं, लैंग्वेज मॉडल का sole purpose is predicting the next word given the previous set of words. That is as simple as that problem statement is. Fair, अगर मैं fair. predict कर पाऊं next word given the previous set of words, and if I do this on billions of possible combinations of tokens and Hmm. sentences, मेरा language model train हो जाएगा. That is the beauty of it. So problem statement wise, it's a very simple problem. ठीक है, बट इट्स वेरी रिसोर्स इंटेंसिव, क्योंकि अगर आपको इतना सारा लेट्स से 100 मिलियन वेबसाइट्स का मुझे अगर डेटा लाना है, उनको मुझे 175 बिलियन पैरामीटर्स से ट्रेन करना है, तो एक तो मेरी मॉडल को स्टोर करने की ही जगह नहीं है मेरे पास। Right. मेरा मॉडल इटसेल्फ ही इतना बड़ा है कि मेरे कंप्यूटर में ही नहीं आएगा। तो उसके लिए मुझे जीपीयूज चाहिए। एक जीपीयू भी इतना पॉसिबल नहीं हो पाता कि मेरा मॉडल होस्ट हो जाए। तो 175 बिलियन को मैं रखूं कहाँ? सबसे पहले तो एक स्टोरेज प्रॉब्लम है। अच्छा, Hmm. फिर स्टोरेज प्रॉब्लम भी अगर सॉल्व हो गई, दूसरी प्रॉब्लम क्या है? मुझे मैं स्टोरेज करके तो मुझे उसका क्या करना है, उसको तो ट्रेन करना है। तो 175 बिलियन पैरामीटर्स के अक्रॉस अगर मुझे ट्रेनिंग करनी है, कंप्यूटेशन करना है, तो आई विल हैव टू हैव मल्टीपल जीपीयूज। ठीक है, फिर उन मल्टीपल जीपीयूज को सिंक करके मुझे एक कॉमन ग्रेडियंट लाना पड़ेगा, एंड देन वी विल हैव टू डू द ट्रेनिंग प्रोसेस। सो इट्स अ वेरी इंटेंसिव प्रोसेस। एक जीपीयू में भी नहीं आता, वो मल्टीपल जीपीयू के थ्रू पैरेललाइज होना पड़ेगा उसको, उसके बाद उसको एग्रीगेट करना पड़ेगा। Right. So that's a very intensive process, resource intensive in terms of the data also, resource intensive in terms of the model parameters also. Both wise, it's resource intensive, right? Right. Right. Perfect. I think However, Subodh. Yeah. 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 Go ahead. Go ahead. However, Go ahead. the second school of thought is क्या मैं पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग कर सकूं? मतलब मेरा चैट जीपीटी का देखो, लैंग्वेज मॉडल का मतलब क्या है? लैंग्वेज मॉडल है कि कैन आई प्रेडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड गिवन द सेट ऑफ प्रीवियस वर्ड्स। अब ये चाहे वो केमिस्ट्री की हो, या चाहे फिजिक्स की टेक्स्ट बुक हो, या चाहे कोड हो, या चाहे ईमेल हो, या चाहे कुछ भी हो, दिस पर्टिकुलर लर्निंग पैराडाइम इज वैलिड एवरीवेयर। Right. अब मैं क्या करता Fair. हूँ, चैट जीपीटी के ब्रेन को उठाता हूँ और उसमें मैं थोड़ा सा फाइन ट्यून करता हूँ। बोलता हूँ कि भाई तुम देखो, इंग्लिश में तो सीख गए हो, लेट्स से तुमने मेडिकल में तो सीख लिया है, कैन यू लर्न इट Hmm. ऑन लेट्स से थोड़ा सा लीगल कॉर्पस में सीख लो इसको। ठीक Hmm. है, या फिर तुमने ओवरऑल तो सीख लिया है, क्या तुम मेरे कंपनी के पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में सीख सकते हो? तो उसमें क्या Right. करता हूँ, मैं थोड़े से पैरामीटर्स उसके फाइन ट्यून करता हूँ। उससे क्या होगा, वो पूरा चीज रिटेन करता है, प्लस माई एडिशनल थॉट वो अंडरस्टैंड करता है। So that's why people are moving towards parameter efficient fine tuning for large language models. Fair. I think that was detailed and I think that was very insightful. I think many of those people who are watching it will agree to that. And those who are watching it recorded, please let me know if that was helpful. It was quite insightful, Subhodeep. So now let's move on. So many of the learners who is watching here, they might be now interested कि ये sound बड़ा exciting कर रहा है. So how do I make a career out of it? तो मैं अगर आपसे पूछूं, not like theoretical, but more of like a practical perspective, someone who wants to become a good generative AI engineer, typically, what should be the roadmap? यानी क्या क्या चीजें उनको किस sequence में पढ़नी चाहिए? In the year 2024, it's Jan right now, and thinking how fast this whole era of AI is evolving and improving so rapidly. So, what should be the sequence of the step? A perfect roadmap for anyone to get started and eventually, do work in this generative AI field. So, क्या क्या topics होना चाहिए? How do someone should start? I'd like to hear from your take on that.
Sure. And I think a lot of people, may have different perspectives, but I will keep it very plain and simple, right? Hmm. आपको अपनी जर्नी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स से के साथ शुरू करनी ही पड़ेगी. लॉट ऑफ पीपल थिंक वी भैया शुभदीप, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स तो मैं यूज करूंगा नहीं हर Hmm. जगह, तो क्यों Hmm. मैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स से पढूं, राइट? Hmm. देखो, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट करना इतना इसलिए जरूरी है ताकि तुम जो डेफिनेशंस तुम जनरेटिव एआई में मैं तुम्हें बताऊंगा या कोई भी तुम्हें बताएगा, तुम्हें उसको Hmm. रिलेट करने के लिए प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए. फॉर Hmm. एग्जाम्पल, जब मैं एलएलएम डिजाइन कर रहा हूं तो सॉफ्ट मैक्स करके मैं एकदम से बता दूंगा. बट अगर तुम्हें यही Hmm. नहीं पता कि सॉफ्ट मैक्स क्या होता है, तुम्हें यही नहीं Hmm. पता कि वो प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तुम तुम्हें वो एडिशनल सोचना पड़ेगा Hmm. उसके लिए कि भाई ये क्या है अब. ठीक है, Hmm. तो इसलिए हम Hmm. हमेशा चाहेंगे कि बेसिक से स्टार्ट करें. ठीक है, कि Hmm. प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स, हाँ, एकदम डीप गैम्बलिंग रूल्स प्रॉब्लम तुम्हें नहीं सॉल्व करना है ना? Hmm. बट बेसिक डिस्ट्रीब्यूशंस, बाइनोमियल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, ये सब चीजें तुम्हें आनी Hmm. चाहिए. रैंडम वेरिएबल क्या Fair. होता है, फिर स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियन मोड, ये सब तो पता ही होना चाहिए. डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैट्स में बेसिकली एक्सपेक्टेड वेरिएबल, ये सब यू शुड नो, राइट? बेसिक, नॉट वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट हाँ, बेसिक चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए. देन यू स्टार्ट विथ मशीन लर्निंग. ठीक है, मशीन लर्निंग में व्हाट यू हैव टू डू इज बेसिकली गो थ्रू द एंटायर गैम्बिट ऑफ आपके, स्टार्टिंग फ्रॉम द लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, आपके पास डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, बूस्टिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बूस्टिंग ग्रेडियंट, एक्जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आपको वो समझनी चाहिए. एसवीएम भी समझ सकते हो इसके Hmm. पैरेलली, राइट? देन ये जल्दी खत्म करना है, इसमें हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे कि भाई 3 4 10 महीने से हम स्टैट्स और मशीन लर्निंग ही पढ़े जा रहे हैं, राइट? हम इसको 1 महीने के अंदर खत्म करना चाहेंगे, राइट? कि मशीन लर्निंग एंड प्रॉप स्टैट्स, चलो हम एक ना 1.5 महीना मान के चलते हैं, 1.5 महीने में ये हमारा खत्म होना चाहिए. Hmm. उसके बाद वी विल पिक अप डीप लर्निंग. ठीक है, एंड डीप लर्निंग को हमें अच्छे से पढ़ना है. डीप लर्निंग में हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है कि भाई न्यूरॉन्स होते क्या है. फिर हमें Hmm. समझना है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, उसमें न्यूरॉन्स की क्या फंक्शनिंग होती है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को इंट्यूटिवली कैसे समझा जाए, राइट? एक्टिवेशन फंक्शंस क्या होती है, ऑप्टिमाइजर्स क्या होती है, बैच नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ड्रॉप आउट लेयर्स क्या हो सकता है, रेगुलराइजेशन क्या होता है. वी एंटायरली अंडरस्टैंड द डीप लर्निंग, एकदम रट लेना है हमें डीप लर्निंग की, हमारे फिंगर टिप्स में हो डीप लर्निंग की कॉन्सेप्ट्स, राइट? बिकॉज व्हेन यू मूव ऑन टू लेटर थिंग्स, दे विल टेक दैट कि वो डीप लर्निंग तो तुम्हें आता है, एटलीस्ट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स. ठीक है, हमें कोडिंग के रेस्पेक्ट में हमें आना चाहिए कि भाई एक सीक्वेंशियल एपीआई कैसे डिजाइन करना है, एक फंक्शनल एपीआई कैसे डिजाइन करना है, भाई अगर मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा हो उसको कैसे फीड करना है, वो सब हमें टेक्निकलिटीज आनी चाहिए, राइट? देन वी सो विल शुभदीप, क्विकली यहाँ पे मूव. मैं आपको थोड़ा सा होल्ड करता हूँ शुभदीप, है ना? तो अभी हमने प्रॉप स्टैट्स बोला, फिर हमने मशीन लर्निंग बोला, ठीक है, और हम लोग अभी डीप लर्निंग की बात कर रहे हैं. तो यू गेव अ टाइमलाइन कि 1 महीने के अंदर में, 1 से 1.5 महीने के अंदर में वी शुड डू द प्रॉप स्टैट्स फॉर मशीन लर्निंग. इसके लिए डू यू हैव एनी लैंग्वेज ऑफ चॉइस, और बी इट लाइक सिंस एवरीवन इज यूजिंग पाइथन as what your choice is, like any suggestion around the language, because many people might be beginning a little beginning from that. So Python, they should learn where, in the beginning itself you suggest, or after learning the stats? Because for machine learning they will need some language to do that code, right? राइट. सो पाइथन बेसिकली आपका पैरेलल चलना चाहिए. ठीक है, तो हम ऐसा कभी नहीं बोलेंगे कि पाइथन आपको पहले खत्म कर लेना है या बाद में करेंगे. सो वी हैव टू Hmm. लर्न पाइथन एट इन पैरेलल. ठीक है, तो Hmm. पाइथन की बेसिक चीजें, अगर आपकी प्रोग्रामिंग की डेफिनेशंस लाइक ऊप्स क्या होती है, लिस्ट, डिक्शनरी, ट्यूपल्स, ठीक है, क्या होता है, हाउ टू, व्हाट इज अ कंपाइलर, पाइथन को कैसे रन करना है, इंपोर्ट कैसे करना है, डेटा फ्रेम्स Hmm. के साथ कैसे खेलना है, फिल्टर कैसे करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. डॉक्यूमेंटेशन पक्का होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो, राइट? सो यू शुड Hmm. अंडरस्टैंड द एंटायर पाइथन. पाइथन हमारा पैरेलल चलना चाहिए. जो वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द थियोरेटिकल एस्पेक्ट एंड द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट. ठीक है, अगर तुमने Hmm. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है ऑन द थियोरेटिकल एस्पेक्ट, इमीडिएटली गो एंड सी कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पाइथन फंक्शन क्या है. उसमें रैंडम एक क्वेश्चन अपने दिमाग में जनरेट करके या कोई भी क्वेश्चन तुम ऑनलाइन उठा के उसको सॉल्व करो. ठीक है, देखो कि तभी कॉन्फिडेंस आएगा. अगर तुम सिर्फ Hmm. थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ते रहोगे कि देखो भैया देखो हमने तो रैंडम वेरिएबल पढ़ लिया, हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, मजा नहीं आएगा. Hmm. जब तक तुम उसको हाथ से कोडिंग नहीं करोगे, कॉपी पेस्ट भूल जाओ. डोंट कॉपी पेस्ट थिंग्स, राइट? दैट इज द वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स दैट यू कैन डू. जब मैंने कोडिंग सीखा था, फर्स्ट थिंग आई डू इज टाइप. टाइप खुद से दिमाग से Hmm. सोचो और टाइप.
और अगर रेफरेंस है तो देखो एंड रिमेंबर इट एंड टाइप, राइट, डू नॉट कॉपी पेस्ट, क्योंकि कॉपी पेस्ट करोगे तो तुम कोड के एक एक चीज को नहीं समझ पाओगे, ठीक है। राइट। सो पाइथन को पैरेलली पढ़ना है अपने को। देन वी हैव, व्हेन वी मूव इनटू मशीन लर्निंग आल्सो, पाइथन को हमें साथ साथ चलना है। अगर हमने डिसीजन ट्री सीखा तो उसका मैं डिसीजन ट्री के पैकेज में, डिसीजन ट्री का सिंपल इंप्लीमेंटेशन क्या होता है इसके लर्न के डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा, ठीक है। एक डमी डेटा सेट उठा के हमें प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। थोड़ा सा और अगर हमें डीप में जाना है तो डिसीजन ट्री के एक्चुअल .py फाइल में जाके मैं देख सकता हूँ कि क्या चल रहा है। दैट विल बी एन एडेड एडवांटेज, राइट। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ कि जस्ट डिसीजन ट्री डॉट पी, मतलब इम्पोर्ट फ्रॉम एसक्यूएल डॉट ट्री बेस्ड मॉडल्स, जस्ट आप अगर इम्पोर्ट डिसीजन ट्री करते हो और फिर उसको मॉडल इनिशिएट करके जस्ट फिट करते हो, उसमें मजा नहीं आता। डिसीजन ट्री के .py फाइल में गिटहब में जाके देखो कि क्या कर रहा है वो, तब तुम्हें एक्चुअल मजा आएगा कि क्या अंदर क्या चल रहा है। पर ठीक है, वो थोड़ा सा लेटर स्टेज है, हम इनिशियल स्टेजेस में नहीं करेंगे, हम उसको थोड़ा हम्म। लेटर स्टेज में रखेंगे। हम्म। सिमिलरली डीप लर्निंग में मैं जाऊंगा तो हम केरस और टेंसरफ्लो को अच्छे से सीखेंगे। पाइटॉर्च भी सीख हम्म। सकते हो, बट केरस 3.0 के साथ क्या हो गया है कि उन्होंने एक पूरी ओवरऑल एपीआई बना देंगे जो कि बैकएंड में टेंसरफ्लो या बैकएंड में पाइटॉर्च के साथ कनेक्ट कर सकता है। तो माय फोकस विल एट द स्टार्टिंग पॉइंट वुड बी टू अंडरस्टैंड केरस अच्छे से। केरस एक ब्यूटीफुल रैपर है ओवर टेंसरफ्लो, जिसमें आपकी सारी 99% ऑफ द प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती है इन टर्म्स ऑफ डीप लर्निंग कोडिंग, राइट। हम्म। तो आप डीप लर्निंग को अच्छे से So deep समझोगे। learning, how much do you think, Subhodeep, what is the right time to master deep learning? कितना समय हमें देना चाहिए to have a good understanding of the deep learning? देखो, डीप लर्निंग जैसे मैंने बोला उसमें थोड़े मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स ज्यादा होते हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में हमें कम से कम 1.5 से 2 महीना स्पेंड करना चाहिए, राइट। अगर मैं थोड़ा अच्छे से करना चाहूँ, राइट। अदरवाइज अगर मैं थोड़ा सा बेसिक्स में कवर करूँ तो 1 to 1.5 मंथ्स इज गुड इनफ। बट अगर थोड़ा सा अच्छे से हर चीज को समझूं, रिसर्च हम्म। पेपर्स को भी हमें थोड़ा सा टच करना चाहिए, क्योंकि उसमें से एब्सोल्यूट फ्लेवर आता है, ठीक है। तो हम्म। उस एब्सोल्यूट फ्लेवर को हम थोड़ा एक्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द रिसर्च पेपर्स एंड विल, हम्म। लेट्स से 1.5 2 महीने का हम लोग रखेंगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के। उसके बाद वी विल मूव ऑन टू कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स। कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क इज बेसिकली हमारा न्यूरल नेटवर्क फॉर इमेजेस, राइट। तो मैं वहां पर हम्म। पूरा समझूंगा कि भाई इमेजेस को पहले कैसे प्री प्रोसेस करते हैं, इमेजेस होती क्या है, ठीक है, पिक्सल वैल्यूज किस रेंज में रहती है, एक्सेट्रा हम्म। एक्सेट्रा। देन वी विल डिस्कस अबाउट कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। और फिर जैसे ही हमारा कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क हो जाएगा, उसके बाद जो हमारा फोकस रहेगा इज टू थिंक अबाउट मल्टी मोडालिटी एस्पेक्ट ऑफ डीप लर्निंग। देखो, डीप हम्म। लर्निंग, लॉट ऑफ पीपल आस्क मी दैट भैया मशीन लर्निंग था तो डीप लर्निंग है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की क्या जरूरत है। लॉट ऑफ पीपल हम्म। आल्सो से मी कि भैया आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से ज्यादा तो एक्जीबूस्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है मेरे टेबुलर डेटा पे, होता हम्म। है। बट कहाँ डीप लर्निंग उस चीज को, मशीन लर्निंग को पूरी तरह हरा देता है, वो है मल्टी मोडालिटी कॉन्सेप्ट। मल्टी हम्म। मोडालिटी मीन्स दैट मैं एक ही नेटवर्क में मैं अपना टेक्स्ट और इमेजेस और टैबुलर डेटा, और मीन्स यहाँ पर हिंदी वाला, और एंड मींस मैं टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो सब कुछ एक मॉडल में भेज सकता हूँ और पूरे वो मॉडल पूरा एक साथ लर्न हो सकता है। हमारा ह्यूमन ब्रेन भी वैसे चलता है, राइट। हमारा ह्यूमन ब्रेन, जैसे आप मेरी आवाज सुन रहे हो, ठीक है, हम्म। आप वीडियो देख रहे हो, राइट, आप कुछ और सोच रहे हो, राइट। सो इन सब चीजों का मिक्सचर आपके ब्रेन में जा रहा है, राइट। सो इट्स अ हम्म। मल्टी मोडालिटी, आवर ह्यूमन ब्रेन इज मल्टी मोडालिटी, राइट। तो हम मल्टीपल चीजों को कैसे एक नेटवर्क में फिट फिट करें और उसको हम ट्रेन करें, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डीप लर्निंग मल्टी मोडालिटी, वो हमें आना चाहिए। हम्म। उसके बाद हम एनएलपी स्टार्ट कर देंगे। एनएलपी के साथ साथ हम लोग करेंगे कि भाई पहले हम सिंपल काउंट वेक्टराइजर, टीएफ-आईडीएफ क्या चीजें होती है, ये सब बहुत जरूरी है, इनको हम स्किप नहीं करेंगे। फिर हम्म। सीक्वेंस मॉडल्स में जाएंगे, आरएनएन, एलएसटीएम, जीआरयू। देन हम अटेंशन समझेंगे, ट्रांसफॉर्मर समझेंगे, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द एलएलएम कॉन्सेप्ट्स, राइट। और हमने जब कंप्यूटर विजन किया था उसमें हम अपना गैन्स भी पढ़ेंगे। तो वो आइदर आप जनरेटिव एआई के लिए अलग से कर लो कि गैन्स अलग से और एलएलएम्स अलग से मैं कर लूँ, या विजन के अंदर ही आप गैन्स इंक्लूड करके और एनएलपी के अंदर एलएलएम्स इंक्लूड करके आप उसको कर सकते हो। द लास्ट बट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एमएल ऑप्स।
ओके। Hmm. और अभी तो एलएलएम के लिए एलएलएम ऑप्स भी हो गया है, राइट? कि Hmm. भाई देखो, नोटबुक में करना अच्छी बात है, जुपिटर नोटबुक में किया, आई हैव परफॉर्म द मॉडल। वैसे एलएलएम तो हमेशा हम जुपिटर नोटबुक में चला भी नहीं पाते, राइट? बट उसके लिए भी तरीके हैं। तो दोज एलएलएम्स की एलएलएम ऑप्स के साथ, या एलएलएम को कैसे क्लाउड पे चलाना है, या उसको कैसे डिप्लॉय करना है, मेरे वो कैसे एक एपीआई में चलेगा, राइट? Not only Hmm. LLMs, any model, right? Any model, how it should be deployed on a cloud, right? Which is very, Right. very important. तो एक क्लाउड टेक्नोलॉजी पकड़ो, Azure पकड़ सकते हो, Hmm. क्योंकि Azure OpenAI अभी उसके साथ इंटीग्रेट हो चुका है, राइट? तो Azure पकड़ो एंड सोचो कि भाई, या समझो कि एक मशीन लर्निंग को मैं Azure में कैसे चलाऊं, राइट? Azure का डेटाबेस कैसे है, कनेक्टर्स क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? तो क्लाउड के साथ पढ़ना है हमें एट द एंड ऑफ द डे। Right. I think it was pretty detailed, Subhodeep, and that's what we wanted to, scratch in this detailed discussion. Uh, like since we have covered most of the things, so I don't want to things, keeps little, so would you have any suggestions around any kind of, the public resources which is available? There are so many courses around, at PW Skill itself. We have run a lot of courses around the data science. Very lately, we have launched a course on the generative AI. I think you have been also teaching with us on the skills. So we do that. But just to keep all these, the paid courses aside, do you suggest, so for example, I'll just give you a reference. Say, for example, someone who's looking for a competitive coding, maybe they will go for some sites like Code Forces, Lead Code, all these stuff, right? So, do you have any suggestion, like apart from Kaggle, what are the other resources or the places that you suggest that people who are trying to look for some sample projects, some data, some practice problems, where they should look up to? Any suggestions there? Right. So in terms of recorded content, right? Some things that I have seen are very good is NPTEL का एक deep learning playlist है by Professor Mitesh Khapra, which I absolutely adore. In terms of the way of explanation or the intuitiveness that guy brings in, right? So that's a beautiful resource. आप Mhm, अपना स्टैट्स खान एकेडमी से देख सकते हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट, राइट? इन टर्म्स mhm, ऑफ आपको कैसे कवर करना है डेटा, ऑफ कोर्स कैगल, यूएसएल मशीन लर्निंग रिपोजिटरी, दीज आर good places wherein you can find in data. But the thing is ki, see, my thought process of learning is, you know, think of a very conflict driven approach, right? And mhm, see, आप जितने भी complexes में चले जाओगे, you can find data online, you can uh, search for multiple things in terms of that, but think of how you would design a good code, right? Because world is now moving to no code platforms, right? So mhm, my mentor, Dr. Sailesh Kumar from Geo, I adore him a lot, and I kind of worship him because his kind of thought process in terms of um, the entire spectrum of data science is very, very interesting. mhm, mhm, Now, what we think of code is very, we kind of think it very linearly. ठीक है कि भाई देखो, हमारे ये एक यूज केस मिला है, ये डेटा मिला है, इसमें हम ग्रुप बाय करेंगे, फिल्टर करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हार्ड कोडेड कोड लिख देते हैं हम लोग कि भाई यहाँ से mhm, फिल्टर किया, ये किया, वो किया। हम कॉन्फ्लिक्ट ड्रिवन अप्रोच नहीं सोचते। हम ये नहीं सोचते कि भाई क्या ये कोड स्निपेट रीयूज हो सकता है। जैसे पैंडास mhm, पैकेज है, ठीक है? जिसने mhm, भी उस पैंडास पैकेज को बनाया होगा, उसने ऐसा तो नहीं बनाया कि भाई विश्वा के कंप्यूटर में चल जाएगा बट शुभदीप के लैपटॉप में mhm. नहीं चलेगा, या शुभदीप Right. उसको नहीं चला पाया। उसने एक कॉन्फ्लिक्ट ड्रिवन अप्रोच बनाया कि भैया कोई भी Hmm. सीएसवी दो, ये सारे फंक्शंस चलेंगे, राइट? कोई भी एक्सेल दो, ये सारे फंक्शंस चलेंगे, राइट? तो हमें कॉन्फ्लिक्ट ड्रिवन अप्रोच सोचना पड़ेगा एक कोड के लिए। हम यूज केस किस तरह से नहीं सोच सकते कि भैया मैंने एक यूज केस बना दिया कि क्रेडिट कार्ड फॉल्ट डिफॉल्ट डिटेक्शन फॉर अ पर्टिकुलर बैंक। क्या ये यूज केस मल्टीपल फ्रॉड डिटेक्ट प्रॉब्लम्स पे हॉरिजॉन्टली स्केल हो सकता है इन टर्म्स ऑफ द आर्किटेक्चर? वो सोचना है। Hmm. तो उसके लिए हमें ऑब्वियसली एग्जिस्टिंग यूज डेटा सोर्सेज फ्रॉम कैगल यूसीएल तो कर ही सकते हैं, बट इट विल हैव टू कम फ्रॉम इन योर विद इन कि क्या मैं
absolutely no hard code use करके, nothing should be Hmm. hard coded in your code repo, right? Can it be a config driven approach? That is what we have to think. Hmm. ठीक है. Cool. So I think that's detailed. I think I know we have a limited time, so I'll just try to open up with few of the questions. One of the questions that normally student ask, and I'll take from here itself. People say that today Google has provided this very convenient Google Collab option, right? And then you have the Jupyter Notebook, which you run locally, install, and do all this manage yourself. So out of these two, which you prefer and why, right? This is one of the questions I see normally people do ask. And can I do everything on Google Collab? So how would you Right. like to take this to Subhodeep? So as per देखो, convenience के मामले में गूगल कोलैब इज मच बेटर. व्हाई? बिकॉज आपके पास लेटेस्ट वर्जन्स ऑफ पैकेजेस रहेंगे, राइट? आपको डिपेंडेंसीज के साथ ज्यादा इश्यूज नहीं होंगी, ठीक है? Hmm. वो सब कन्वीनियंस है, एज लॉन्ग एज यू आर इन द एक्सपेरिमेंटेशन फेज, और एज लॉन्ग एज यू आर इन बेसिकली ट्राइंग टू कम अप विद द बेस्ट मॉडल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो गूगल फ्री है, तो गूगल का फ्री सब्सक्रिप्शन, मतलब फ्री कोलैब, वी कैन यूज इट एंड इट सॉल्व्स 80% ऑफ आवर प्रॉब्लम्स. बट जैसे मैंने बोला कि आवर कोडिंग जर्नी need not be restricted only to Jupyter notebooks or Hmm. experimentation. If I have to deploy it, right, I have to dockerize it, right? How I have to create an API out of it, right? अब वो API जो बनेगी वो आपके मशीन पे ही बनेगी, right? ठीक है? तो Correct. आपको जुपिटर नोटबुक के साथ साथ एक कोड एडिटर या आईडी टाइप्स आनी चाहिए, राइट? जैसे VS कोड हो गया, ठीक है? Hmm. ताकि आप, जैसे मैंने बोला, आपको अपने कोड को मॉड्यूलर डिजाइन सोचना है, ठीक है? अगर आपने फीचर इंजीनियरिंग की है तो सब कुछ हम एक नोटबुक में नहीं लिखेंगे. आपने Hmm. फीचर इंजीनियरिंग करोगे तो उसका डॉट पीवाई फाइल अलग होना चाहिए. आप प्रेडिक्शन करोगे तो प्रेडिक्शन डॉट पीवाई अलग होना चाहिए. आप डेटा इंजेस्ट करोगे तो डेटा इंजेक्शन डॉट पीवाई अलग होना चाहिए, राइट? आप Hmm. मॉडल को आप डॉकर फाइल बनाओगे तो उसके लिए अलग होना चाहिए. तो आपको एक पूरा कोड आईडी समझना पड़ेगा to become professional in this journey, right? You will not stick to Jupyter notebook because Jupyter notebooks are not deployable. ऐसा नहीं होगा ना कि कोई तुम्हें फोन करेगा, हाँ विश्वा, अच्छा ये डेटा आ गया, मॉडल चला दो. विश्वा 10 बजे उठ के लैपटॉप खोल के मॉडल चला रहे, ऐसा नहीं होगा. मॉडल्स विल बी deployed on a live data and it will run on its own, right? So that is how you have to think about in terms of a modular design and a proper ID. एंड आप कोलैब में एक्सपेरिमेंट करके, बट अल्टीमेटली यू हैव टू कम बैक टू योर सिस्टम एंड प्रिपेयर योर कोड इन अ विजुअल स्टूडियो फॉर्मेट, VS Code Fair format. enough. Fair enough. So I think we'll pick a few questions in the chat. I think one of the students is saying that I'm still in standard 12th and I want to become a data scientist. I think I'm pretty happy that you have started thinking now itself. But I believe the story remains the same. And so I would like you to comment more. But whether you are a 12th pass out or whether you are an engineering grad or you come out of that, I think the steps trails remain the same, and the level of mathematics that you learn in standard 10th, 11th, 12th, I think that's a basics, and that's on where you have to add on the top of it to learn this. So, I would like you to, stress upon more things if you want to add here. Absolutely. No, I think it's a amazing that currently the youth is so ahead of us, right? They like, for example, if I think of myself in class 12th, I didn't know what I would want to do at Right. all. Think of, leave thinking. I mean, I can't even imagine that I'm in a webinar in class 12 talking about data science. So kudos to that, first of Right. all. Really, really appreciate that. Now, what you have is the biggest resource of time in front of you, right? So what I would suggest is, you know, um, do perfect your coding, right? You're in class 12th, make sure that you become one of the best coding experts, right? Mm. Once you are, that coding as a base becomes very strong for you, okay? Then you pick data science, you pick front end language, right? And you also learn a good programming language like Python and Java. अगर आपने सीख लिया तो आपको टेक में कोई नहीं बीट कर पाएगा 5 years down the line, 6 years down the line, right?
सबसे इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर स्टेज पे डेटा साइंस तो सीखना ही सीखना है ऑफ कोर्स, एंड वो बात तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, राइट? बट व्हाट यू हैव टू बी वेरी वेरी मच फोकस्ड इज टू शार्पन योर कोडिंग स्किल्स, बिकॉज एक बार आपकी कोडिंग स्किल्स, अब कोडिंग जैसे काफी लीडर्स लाइक बिलियनियर लीडर्स बोलते हैं, लाइक कोडिंग इज बिकमिंग द, you know, should now will become the first language in certain days, at least for tech, right? तो वो आपका अगर बेस तैयार हो जाए, राइट, तो आपको पढ़ाना है, या आपको मोटिवेशन स्पीकर बनना है, या आपको जस्ट स्पीच देना है, डजेंट मैटर, राइट? वो चीज हो जाएगी। तो आप एक फील्ड चूज कर लो कि आपको डेटा साइंस करना है, उसके लिए आप कोडिंग का बेस पूरा तैयार कर लो, एंड देन यू फॉलो द जर्नी दैट आई हैव टोल्ड यू, एंड परफेक्टली आई थिंक यू शुड बी एबल टू shine in the next 4 5 years. Absolutely. So just to add, Subhodeep, so I think one of the more student is asking that I'm the year engineering first year, what should my roadmap to do it? So your people are lucky, as Subhodeep rightly said, that you guys have something which most of the people don't have, and that is time, right? Exactly. So if I talk about, in year 2024 or going ahead in the year, one of the most impactful profile or sought after profile is the one where the person knows how to build software and then integrate AI into that, right? Because see, Exactly. software and AI are not two different things. For example, only if there's a Netflix, then the recommendation system comes there who tells you which movie Exactly. should you Works. watch. Absolutely. If it is Absolutely. Amazon, then there is a the product recommendation. If there is a LinkedIn, then there is a job recommendation to you. So the software and the AI or machine learning or data science, how do you call it? They go hand in hand. They are the two sides of the same coin. And only when you have two sides, you have the real value of the coin. So if Right. you have Absolutely. time, I'll definitely want you to be like, that will be called a full stack engineer in the real sense, where you know everything, application, how data science is, and how how to marry each other together to build, the impactful products. Fair enough. So I have another question from Syed Musadik Ilahi. He's saying that what is the requirement to become a generative AI engineer? Those we already discussed that in detail. I think that's what we have been discussing so far. तो आप प्लीज इस वीडियो को, चूंकि ये यूट्यूब है, यू कैन ऑलवेज गो बैक, प्लीज गो बैक एंड वॉच दैट। आई थिंक वी ऑलरेडी डिस्कस इन डिटेल दैट आपको क्या क्या कैसे पढ़ना चाहिए टू बिकम अ गुड डेटा जनरेटिव एआई इंजीनियर। Perfect. So, Subhadeep, I believe we are running out of time. I know you are busy. So, with that, we'll try to conclude this. Thanks a lot for taking out the time, coming and talking to us. I think this was really helpful. A few of the people joined live, but I believe when this video stays on our YouTube channel, log isko offline dekhenge. There'll be a lot of questions coming up. Please put your questions down in the comment. We'll make sure that we are answering that. Thanks a lot for your time, Subhadeep. One last suggestion or remark that you have to all the people who's watching this. Would you like to close it with a sentence or a statement? Sure. No, I think it was a wonderful time having a conversation with you, Vishwa, and kind of discussing this live with our students. So you know, I think it's very very impressive, right? As I said that the maturity that the current youth is having, right, in terms of their thinking about in first year or in class 12, that they want to think about in terms of what they want to become, right? 4 years, 5 years down the line, it's pretty impressive, right? And I want you to keep that vigor, that vision intact, right? You are 10 years ahead of us, right? So if you learn what you learn today, you will be 10 years ahead of us because we are learning something now, right? Right. So in that sense, as I said, Vishwa very appropriately described, you don't sell AI, you sell a product, right? So Netflix is an entire product wherein AI is a part of it. Amazon Alexa is a product wherein AI is an enabler of it, right? So you have to think about that how do you become a very good software engineer who knows very good coding, who can build any kind of a software, integrating AI into it. That is one of the golden statements I think that has come out from this particular talk, right? And I absolutely agree with that. We didn't have that opportunity because we didn't have the understanding itself, right? That what do we want to, it kind of fell into place at certain points of time, and we kind of were at the right time at the right place and kind of had this journey, right? But you have a very well planned course in front of you. Utilize that and take good mentors, follow good people,
and then your vision of the career would be sorted. Hello, hello. Subhadeep, I lost you. Are you talking? Yeah, Yeah, I was perfect. talking. Yeah, yeah. Yeah, Perfect. Thank you, Subhadeep. I do really appreciate. I think all the things that you said was really insightful, really helpful. I believe everyone who watched it will definitely benefit from it. Thanks for being here. The good part is that Subhadeep is already one mentor in one of our courses at PW Skills. He teaches on our platform. So we are launching a generative AI course, which is starting from 31st of January. So if you have not explored that, you can always go to the PW Skills website, explore what all is there, right? And we make sure that we keep on bringing the sessions like this. Thank you, Subhadev. Have a great day. And thank you, everyone who watched us live. Thank you. thank you. Take care. Bye, everyone.